फर्स्ट लेगा, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लैन खेलने के लिए जा रहे हैं, तो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या लगता है आपको कि ये चीज वर्क करेगी हमारे लिए, कि यंग ब्लड फेवर करेगा हमारे लिए, या फिर इनएक्सपीरियंस भी हमारे लिए बैकफायर कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है एक जो उम्र होती है 20-21 साल एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए, और गालिबन कंपैरेटिवली बाकी नेशंस को कंपेयर करें और तो उनका तो एज जो एवरेज निकल के आता है वो इससे भी कम है। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द प्लेयर्स। वन ऑफ द प्लेयर्स वाज वंडर किड रासिया, जिन्होंने पिछले साल खिताब जीता था ईडब्ल्यूसी का, ई स्पोर्ट्स विश्व कप का। तो मुझे याद है शायद 14-15 साल के थे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है अभी तो रासिया शायद 17 साल के भी नहीं हुए होंगे। तो इस वजह से ये पता चलता है कि बाहर कंपटीशन इस हद तक ज्यादा हो चुका है कि आप मान के चलिए एथलीट्स के उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इंटरनेशनल स्टेज पे कितना एक्सपीरियंस मिला है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का यहाँ पे तजुर्बा मिला है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती है। यंग ब्लड ऑफ कोर्स फेवर में जा सकता है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है मेरे दिमाग में, एक और पॉइंट आता है ऑलवेज, ये तीनों के तीनों टीम्स की स्टोरी लाइन भी बहुत यूनिक रही है रॉकी भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे टीम SA2L Esports, अंडरडॉग टू राइजिंग स्टार्स, द न्यू फेस, ऑन द अदर साइड यहाँ पे इनका फैन बेस भी सबसे बड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें टीम IQ टोटल गेमिंग, एक लेगेसी का जो टैग इस टीम के ऊपर, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, एक बहुत बड़ा वेट लेकर के आता है। एक ऐसे टीम एपिक्स गेमिंग, जिनकी स्टोरी के बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये तुरंत आकर के इंडिया चैंपियन बन जाएंगे, और वो बने हैं। तो तीनों की स्टोरी लाइन अलग अलग है, तीनों की टैग लाइन अलग अलग है। कोई यहाँ पे एपिक्स प्रेडेटर है, तो कोई यहाँ पे लेगेसी होल्डर है, तो कोई यहाँ पे न्यू कमर होने वाला है, पर न्यू कमर वो न्यू कमर नहीं रहा है, वो एक बड़ा राइजिंग स्टार बन चुका है। तो ये भी एक बड़ी स्टोरी लाइन रहने वाली है। वैसे क्या लगता है कि यहाँ पे इन तीनों टीम्स में से सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन किसकी वर्क कर सकती है ईडब्ल्यूसी में? देखिए, किसी की भी काम आ जाए भारतवर्ष के लिए तो यही खुशखबरी होगी, क्योंकि इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है तीनों टीमों को ही फुल सपोर्ट है भारतीय दर्शकों द्वारा। तीनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन वो कहते हैं ना, कहानी का अंत अगर हैप्पी एंडिंग हो तो सुनने में ज्यादा आनंद होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इन तीनों में से एटलीस्ट एक आधी टीम तो डेफिनेटली ग्रैंड फाइनल तक जाए, क्योंकि पहली बार हमें स्पोर्ट्स विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो मैं तो इच्छुक हूँ कि इन तीनों टीमों को ही देख सकूं, बट मुझे लगता है शायद नियति और किस्मत की देवी इतनी मेहरबान नहीं है। बट जो भी टीम जाए, मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम्स। डेफिनेटली यार, देखिए ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कोई भी टीम पहुंचे, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं पिछले कुछ दिनों में ना लगातार एक्टिव हूँ कम्युनिटी के अंदर। मैं एक बात तो बार बार सुन रहा हूँ, जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हें प्यार देते रहेंगे। और ये चीज मैं बार बार इमोशन सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इमोशन रहने वाला है, एक बहुत बड़ा एंगल रहने वाला है। केवल प्यार फैंस ही नहीं देते हैं, केवल सपोर्ट फैंस ही नहीं देते, वो जो लोग बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं, टीम मैनेजर्स, एनालिस्ट, कोचेस, पेरेंट्स, ये सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं। उनकी भी मेहनत होने वाली है इसके पीछे, उन लोगों ने भी पूरा यहाँ पे टाइम दिया है। तो देखते हैं कि क्या होगा। पर सबसे बड़ी क्वेश्चन रहता है रॉकी भाई, एक आपको सिनेरियो की तरफ ले जाता हूँ। सोच के देखिए, इंडिया ट्रॉफी जीत चुकी है, कोई भी तीनों में से एक टीम ट्रॉफी जीत चुकी है। सोच के देखिए क्या चेंज हो जाएगा, क्या चीजें चेंज होंगी। क्या ब्रांड्स का पर्सपेक्टिव जो साइड लाइन पे खड़े हुए उनका चेंज होगा? पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जिन्होंने कभी टोका होगा इन प्लेयर्स को कि यार ये एक ऑनलाइन गेम से क्या ही हो जाएगा, फ्री फायर मैक्स से तुम कितना ही आगे चले जाओगे। क्या चीजें चेंज होंगी पूरे डोमेस्टिक इकोसिस्टम के अंदर? देखिए, डोमेस्टिक इकोसिस्टम मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन भी काफी रही है मेरे डोमेस्टिक सर्किट में। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज जाएगा, और जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे इच्छुक होंगे कि हमारे जो लड़के हैं इस प्रोफेशन में जाएं। इट्स नॉट इजी एट ऑल जब पेरेंट्स जो हैं गेम को यहाँ पे सोचे कि ये भी एक नोबल प्रोफेशन हो सकता है, बट इट इज एक्चुअली, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे कई दुर्लभ मौके हमने देखे हैं और जहाँ पे भारतवर्ष को ई स्पोर्ट्स के सिनारियो में जो है सक्सेस मिली है और पूरा सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है ये एक वो, अगर जैसा आपने कहा आपके मुंह में घी शक्कर लड्डू जो भी दुनिया की सबसे मीठी चीज हो, बट
मैं पर्सनली ऐसा तो नहीं है कि मैं जरा सा खड़ूस किस्म का हूं, बट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक ना होते हुए मुझे लगता है कि शायद एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। बट अगर भारत जीतती है तो मैं तो भैया वो दादा की तरह, सौरव गांगुली की तरह टी शर्ट उतार के नाचने के लिए भी तैयार हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आई विश ऐसा कुछ हो और जितने दर्शक हमें देख रहे हैं वो लोग भी चाहेंगे कि रॉकी भाई एक बार बढ़िया डांस दिखा दे। वैसे आपका एक डांस क्लिप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपने बहुत बढ़िया डांस करा था, मुझे भी याद है। आपके कई सारे डांस क्लिप पूरी कम्युनिटी में वायरल है। प्लीज दोस्तों बताना है कहाँ पे इनकी क्लिप्स कटी है और आज भी काट लेना ये क्लिप। पर देखो रॉकी भाई, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि चीजें चेंज हो गई यार। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि देखिए पेरेंट्स एंड सभी प्लेयर्स का, पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो पर्सपेक्टिव वो चेंज हो, और ब्रांड्स जो साइड लाइन पे बैठे हैं, आई थिंक सो अगर कुछ ऐसा होता है आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी को साथ में मिलकर के आगे बढ़ना है। पर देखिए रॉकी भाई, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग स्लो आगे बढ़ रहे थे, अब थोड़े से टफ फेज पे चलते हैं और अब थोड़ा सा पेस बढ़ाते हैं। आपको एक बोल्ड प्रेडिक्शन देनी है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस की, और साथ में आप इसको डिफेंड भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि आपने प्रेडिक्शन क्यों दी। आपको क्या लगता है, वैसे आप ही नहीं, इस चीज का आंसर मैं भी दूंगा, मैं भी फंसूंगा आपके साथ ही साथ, पर आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी टीम है जो जीत सकती है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? आप कहीं पे भी लिख करके दिखा सकते हैं और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्यों लगता है। EWC के लिए मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन रहेगी बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स। ओके, मैंने भी यहाँ पे प्रेडिक्शन दे दी। मेरी तो प्रेडिक्शन होने वाली है टीम एपेक्स गेमिंग TAG। रोके भाई, इसके पीछे रीजन दीजिए कि आपने ये प्रेडिक्शन क्यों दी और आपको क्या लगता है कि बुरीराम यूनाइटेड इस बार जीत सकती है। और बिल्कुल बेसिक फैक्टर्स पे बात करूंगा। FFWS के चैंपियंस हैं, जिस तरीके से बुरीराम यूनाइटेड खेल रही है, एक अलग ही भाईचारा उनमें दिख रहा है। उसके अलावा बहुत ज्यादा साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशियन टूर्नामेंट्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, जिससे कि पता चल रहा है कि अपने अंदर कोई रणनीति छुपा रहे हैं। और ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि जब कोई टीम अभी वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीती हो, उसके बाद इतना ज्यादा टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट ना करे। तो मुझे लगता है शायद बुरीराम यूनाइटेड के पास अभी भी लगता है नए मेटा के हिसाब से कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो बाकी टीमों ने देखे नहीं है। तो मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन तो देखिए बुरीराम यूनाइटेड है। फेवरेट्स तो 2-4 हैं, बट मुझे लगता है ये टीम सबसे फेवरेट हो सकती है बुरीराम यूनाइटेड, क्योंकि फॉर्म भी है, खिताब भी है, सिनर्जी भी बहुत सही सेट है टीम में, और सबसे बड़ी बात अब इस कमाल की टीम के इतने अचीवमेंट होने के बाद भी ये अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पे खेलते हुए नहीं दिखे हैं इन पिछले कुछ महीनों में। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा बुरीराम यूनाइटेड को यहाँ पे डिफेंड भी करा है कि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, गायब है। मैंने तो ऑफ कोर्स टीम एपेक्स गेमिंग को ऑफ कोर्स चूज करा है। देखिए व्हाई नॉट, अभी रिसेंटली इंडियन चैंपियन बने हैं, हमने FFMAI समर्स के अंदर इनका रिजल्ट देखा, वो परफॉर्मेंस आखिरी गेम मुझे याद है, शायद से वहां से हिस्ट्री चेंज हो जाती, वो आखिरी लम्हा। ये टीम बहुत क्लोज आ चुकी थी, ये टीम इंडिया को एक और बड़ा खिताब ला करके देती। तो मैं इस बार बिल्कुल अपना दाव इनके साथ लगाऊंगा और बिल्कुल इनके साथ आगे जाऊंगा। वैसे रॉकी भाई, मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये क्लिप कट चुकी है, ठीक है, तो ये क्लिप रिकॉर्ड भी हो रही है और कट भी चुकी है, और अब लोग इस क्लिप का जो प्रेडिक्शन है हम पेरिस के बाद देखेंगे, EWC 2026 के बाद देखेंगे कि आप सही रहे या फिर मैं सही रहा। पर सेगमेंट को अब आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा रैपिड फायर की तरफ। और रॉकी भाई, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यस या नो और शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है? ठीक है जी, मैं भी आंसर करूंगा आपके साथ ही साथ, ठीक है? आपको क्या लगता है एक इंडियन प्लेयर जो EWC के बाद ग्लोबल नाम बन जाएगा? जैक। ओके, मेरा साहिल। ऑलराइट, तीनों में से कौन सी इंडियन टीम पेरिस के प्रेशर को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी? एसेट्यूअल ई स्पोर्ट्स। टीम एपेक्स गेमिंग, ओ सॉरी, हाँ टीम एपेक्स गेमिंग, मैं चेंज नहीं कर सकता, एक बार बोल दिया। एक इंटरनेशनल स्क्वाड जिससे इंडियन फैंस को सच में डरना चाहिए? बुरीराम यूनाइटेड। आई थिंक सारा क्यों। चलिए, स्लीपर पिक ये रहने वाली है, वो टीम जिसके बात नहीं कर रहे हैं पर टॉप 3 पक्का फिनिश करेगी इंडिया से।
इंडिया से तो ऑनेस्टली मैं किसी भी टीम को नहीं देख रहा हूँ अभी भी टॉप 3 में, बट अगर देना ही है जवाब तो आईक्यू टोटल गेमिंग। ओके, इंडिया से मेरी तरफ से टीम ऐसे 12, लेट्स सी क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन टीम्स का पोडियम फिनिश करने के कितने परसेंट चांस है? 10%। ओके, मेरे ख्याल से 50। चैंपियन पिक ले लेते हैं एक बार। AWC 2026 फ्री फायर मैक्स ट्रॉफी कौन उठाएगा? बुरीराम यूनाइटेड। आई थिंक सारा और क्यों, क्योंकि 2 बार वो लोग क्लोज आते आते रह गए, मुझे लगता है इस बार कर सकते हैं। चलिए, ये सेगमेंट हमने पूरा कर लिया रॉकी भाई, एंड बहुत अच्छा लगा। काफी सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिले, पर सच बताऊं इस बार मैं भी काफी ज्यादा इमोशनल हूं, क्योंकि अब मेरे दिल में वही गाना बज रहा है बार बार, जैसे जैसे हम लोग डेट के पास आ रहे हैं, लहरा दो बस। Bonjour, Tash Bunny. We made it to Paris. That's right, Seven, and today's gonna be hype because today is going to be Free Fire. We got Group A and Group B. That's right, and we also have the defending champions, EVOS Divine here. Can they defend their title? Who will become the champion because this is Free Fire at the Esports World Cup. Let's begin. Welcome to Paris, where we are here for Free Fire at the Esports World Cup 2026. It's hot outside, but the competition inside is even hotter. I'm Lace. And I'm Conchita Caroline, but before we go into this year's competition, let us take you back to 2025, where EVOS Divine were the first team to activate a champion rush, doing so on Game 6, winning 2 games, placing top 4 5 times before finally cinching the title on Game 10. Now, the competition is so much different this year, and I think there's a lot of obstacles that EVOS Divine are going to have to face first. Exactly right, and that's another 24 teams, 2 groups of 12, over 12 different maps, and the top 4 team from each group stage will head through to the finals. Now, the 5th and 10th are going straight to the survival stage, and unfortunately, we're gonna have to say goodbye to the bottom 2 because they are going to be eliminated. 12 maps is a lot, but I think it's so worth it for the prize pool that we have. $1 million, 300,000 to the first team. And one of those teams that you might want to keep an eye out for is Team Secret, our underdogs here for Free Fire, taking over the Victorious Championship from the AGAL team. Things are about to get real spicy. Yes, but let's not forget, we still have our reigning champion. Hello, once again, EVOS Divine is back, and I think they're so ready for it. Yes, and Barum struggled actually in EWC last year, and of course they are going to change things here, but they did get the win in the Free Fire Global Series. So yeah, I feel like they've got a little bit of a vengeance. Yes, I did had a chance to chit-chat a lot with Wasana before, and he did say that they came in good spirit. I think this might be it for them. Yes, and if that doesn't help you guys, we have a tournament format explainer video for you guys to have a look at. Free Fire will once again make its mark at the Esports World Cup. So let's take a closer look at the tournament format and how the teams can reach that final booyah. 24 of the best Free Fire teams from around the globe will enter the arena and throughout 4 intense days battle for a share of a $1 million prize pool. The competition is divided into 3 stages: group stage, survival stage, and match point finals. We start in the group stage, where our teams are split into 2 even groups of 12 participants. Each group plays a set of 12 matches, after which 4 best teams from each group advance directly to the finals. Teams placed 5th to 10th move to stage 2, and each group's bottom 2 squads are sadly eliminated. Next comes stage 2, the survival stage, where 12 teams once again have to fight each other throughout 10 intense matches. Here it's all or nothing, as only 4 top teams advance to the final stage, and 8 squads can start packing their bags. That brings us to the match point finals, where the remaining 12 teams, 8 from group stage and 4 from survival stage, clash for the ultimate glory of becoming the Esports World Cup Free Fire champions. Here, there's no map cap. The game goes on until one of the squads earns 90 points and, after that, manages to score a booyah in the next match. Only then can they call themselves the champions. Here
at the totem, and I am joined by the reporters of the club championship. So every single one of you is going to give us a little bit of a rundown. We got Chris, Trav, and Glitter. I'm going to start off with you, Chris. How are things going, and what can we expect from your stage? Well, Dota, to be honest, has kind of been business as usual. Been going through the motions, getting through the group stage. Today is when we have actually started the survival stage. Relevant of that, though, we did have 4 teams top their group, and Falcons, one of those squads, managing to get through, guaranteeing themselves some club championship points. So that's something to keep an eye on. Another notion, though, today, we've got the first 2 teams coming up in this survival stage. Team Liquid, currently down in their series, not looking too great for them. And Virtus Pro, they're 1-1 in their series. So both those 2 teams could go out today. Considering where they're at in club championship status, that is a massive, massive result if they go home today. Absolutely. And then from you, Trav? Yeah, so we had Fatal Fury last week, City of the Wolves, which was a big, big thing for Navi in general. So it was Dark Angel who managed to take the 1,000 points home, which is huge for them as well, because they're one of the competing teams in the club championship. Second place as well, Virtus Pro have got a large array of teams across it as well. So them getting those 750 points was huge for them. And then Reject as well, coming in 4th, getting 300. So they had a week for those organizations. We're on to Mobile Legends Bang Bang this week, the Women's Invitational, and that has kind of thrown a bit of a spanner in the works. Falcons back again with a couple of rosters, no surprise there. They're investing heavily in Stage 4 this year. And Team Vitality off to a flying start. Yeah, they're the title defenders. I know that for sure. They only managed to get 250 points over in Valorant, so we'll see how that's going to play out for them. But Apex is a very interesting one, Glitter. Yeah, very different from what you guys have kind of been seeing on your stages. When it comes to Apex, it's obviously done, and the winner was Unlimit. Now, that's important because Unlimit is not participating in the club championship, so those points gone out the window. But the teams we are paying attention to are Team Vision and Sentinels in 2nd and 3rd, who did manage to get some points on the board for their club. However, now we're going into week 2, and looking forward to that, we have Free Fire, right? Now, this is kind of where my stage ties into your stages a little bit more, because this year the teams that we're looking at are Team Falcons and Vitality, funny enough. Now, Falcons won Free Fire in 2024, however, they did not last year around. And Vitality even outplaced Falcons last year in Free Fire. So now those are the teams we're going to be looking at, and Falcons actually are a team that are expected to do very well this week. So we'll have to see what that means in the end for our club championship, but it's going to be exciting. It sounds like the teams that we are keeping our eyes on this week is going to be Sentinels. They're also competing on the League of Legends stage for us. We also got to keep our eyes out for Vitality because, of course, they are in the running. Virtus Pro with a lot of teams across a lot of different titles. And for us on the league stage, AGAL. This is their debut here at EWC. They have a lot of teams competing. We're going to see how this week pans out. Thank you so much for watching. We're going to be back to you guys. $75 million, 25 journeys, over 200 clubs, only one club champion. The club championship is the beating heart of the Esports World Cup. Over 7 weeks, esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point counts. The club at the top walks away with $7 million and the title of Best Esports Club in the world. It's not about being the best at one game. It's about being the best across all of them. Depth, versatility, consistency under pressure. One championship trophy, one title. Who will take it? Watch history unfold in Paris at the Esports World Cup 2026. Bonjour, it's Yusul and welcome to EWC 26. Right next to me is our player Razia from EVOS Divine, and of course here's our beautiful translator as well. So, to our first questions, being the champions of EWC 25 and getting back here again, are you willing to rewrite the history or making something new at this moment? Jadi sebagai champion tahun lalu, adakah tahun ini kamu sudah bersedia untuk melangkah lagi sekali sejarahnya? Yeah, I'm really confident right now because we're gonna ready to back-to-back champion again. Very confident, and I love that. They would love to get the championship once again. But here's another question. We have Team Secret right here. As you guys all know, Team Secret SWAG got their championship at the Free Fire World Series 2026 spring here in Vietnam, and they're also here to compete with EVOS Divine. So, how do you think about them? Jadi kan ada Team Secret kan, jadi bagaimana perasaannya dengan mereka itu? I'm feeling like
I want to prove to them like EWC is our place. EWC is mean EVOS World Champion, not Esports World Cup. Oh my god, wow. I feel the intensity is really much here, but overall that is all we can hear from Russia, and I would love to see more from EVOS Divine and of course other teams right here in EWC 26 Free Fire. See you guys later and thank you for listening. Welcome, ladies and gentlemen, to the Free Fire at Esports World Cup 2026 live from Paris. We're finally here. By the way, my name is 7WG. I'm going to be your studio host, and I'm joined by some amazing talent, none other than Conchita and Neptune. Neptune, I'm going to start with you. How are you enjoying Paris so far? Oh, it's quite different. This is the first time in Paris. I'm really loving it right now, especially the energy that we have right now. I mean, yeah, we're next to some other stages, and boy, we can definitely feel the crowd energy. How about you, Conchita? How are you enjoying Paris? It's also my first time in Paris, and it's been amazing. I just can't wait to see how the competition goes this year, and yeah, having a great time so far. I mean, you know what? Let's just dive right into the competition because we have EVOS returning, and they could be back-to-back champions here at EWC, Neptune. Oh, have to see though, because on the regionals, it seems like they're having a lot of trouble. So I don't know if it's just a setup so that they will not be known, their strategy will not be known up to this level, but hopefully it's for the best of them, because again, who doesn't want to see them to be back-to-back? Yeah, of course. I mean, if we're talking about EVOS Divine, let's not forget we have Rasha, the youngest player, also the MVP of last year. I'm pretty sure that today he's back with a vengeance, and he is going for redemption. Honestly, I think EVOS Divine is trying their best to perform well at the EWC, because I just said before, the regional wasn't so great for them. They were having a bit of a time. They struggled, but yeah, I think things are looking up, so I'm pretty hopeful. As an Indonesian, I can help but feel hopeful. Well, let's find out how hopeful you guys are before we move on to another team. Are they going to make it directly to the finals, or are they going to be going to survival? Conchita, if you want to go first, or Neptune? Can I go first? Go ahead. I think I'm going to sound a little biased because, again, Indonesian, I can't help it, but I really want them to go straight and not go through the survival. Not because I have that much confidence, but also I'm a little worried, actually. I'm a little worried for them to go into the survival stage, so it might as well be, do it quick, do it better, do it perfect, and then go straight to the next stage. I don't know though, because even I think they're confident enough, despite of the record of not having performed from regionals, they're confident enough that if they are being thrown into survival, they know exactly what needs to be done to get into the grand finals. That has been the storyline that they have, even in Southeast Asia. And that's one reason as well. When it comes to the numbers, that looks like they're struggling. But now that I'm thinking about it, how well they are recovering after those instances. So I guess they might be able to do it again, even in EWC. I mean, sometimes some teams actually benefit. I know this sounds crazy, but sometimes teams benefit if they end up getting that little extra oomph in survival. But the thing is, as you said, it is scary in survival because only the top 4 will be moving on to the grand final. So I don't know if they want to put themselves in that position. True, but especially as the reigning champion. Yes, that's very true. You know what? I don't know if they want to feel that extra pressure there in survival. One team that's looking to not go to survival and qualify directly to finals is Buriram United. Yes, I'm very proud of Buriram United. I think winning the global finals in 2025 really gave them the confidence they much needed. And EWC is something they've been looking forward to finally have in their story, because it's something that they don't have yet. And Wasana, I think Wasana has been showing a bit more maturity in the way that he's playing, the role that he's taking. I hope that he can be one of the best players that we can see at the EWC 2026. Yeah, I do agree. I mean, Misana being consistent, being the best rusher out of the team, and also the chemistry out of the team right here has been built for so many years. Even if they haven't grabbed any title or has failed in EWC, we've seen how well they recovered on the global finals. And it's not as if they made a lot of change. The strategy is pretty much the same. Slow in the beginning, mid-game, towards the end game, that's there where they get all those elimination. And pretty much that's also the same in Champion Rush, because you don't have to rush that much in the first instance, in the first stages. It's just that Puya needs to be taken where it really matters, and that is for the last day. And I think it's like a perfect Cinderella story, I mean, they finished 9th in the last year of EWC, but then slowly trying to
build themselves up. They show consistency. They finally won the World Series and in the Global Finals. It's just a perfect run for them. This would be a full circle moment for Buriram United Esports. Oh, they're just missing that EWC championship. I know. Another team that's actually missing that one too, that I know a lot of Brazilian people are going to be happy about, is going to be Fluxo. Fluxo's coming in with one of the MVPs too out of the region in MT7. We'll wait and see what that squad's going to be doing. But out of Group A, when we're looking at it, we also have Falcons in there, right? And that's an org that has won before here at EWC Free Fire. They only have just one player from when they won though, and that was On Fire. Okay, I think Neptune's gonna take this one, because speaking of Falcons, I can hear your voice in my head already. Well, that's one thing though. I mean, Team Falcons, at some point after not like losing a few of their players, they lost their identity. We are not seeing that consistency anymore. There is some fire similar to what we've seen from Buriram United, but it's not that aggressive. It's not that much we're in. It's a sure win for them. So it's really difficult to tell if they're just playing with us, just pulling our leg right now, that they're not that strong, and then later that's when they bring in those booyahs in the champion rush. Because again, it's one of the things that I noticed from some of the teams, they choose some stages or some tournament wherein they really want to pop off, because they don't want to give out that much of strategy on their regionals. So I think it's a bit of an unpredictable situation when you talk about Falcons. So yeah, we might have to just wait and see. Okay, talking about unpredictable, I mean, we got India coming finally to EWC. That could be an unpredictable and a big question mark to a lot of people, as in Group A, we're going to have tag Apex Gaming. I know a lot of fans are going to be tagged on top. We'll see if they're actually going to end up there. The thing is, these groups are going to be playing 12 matches. Yes. Can tag maybe end up surprising us in these first 6 matches that they'll be playing today? Yeah, I do think that's quite possible, because then again, it's a long game that they're playing. It's a game of endurance, basically, because 12 maps is quite a lot. I mean, from the 6 that we have last year, it's a bit of a jump. But yeah, consistency is something that the teams need to show. And I think they've had it down, because this isn't their first time coming. They know exactly what they're facing. So yeah, it's just quite interesting to see how they maintain the stamina that they have, the endurance that they're going to have to show. Yeah, I do agree, because like even on a LAN event, their qualifiers is coming from a LAN event, so they have that experience already. But I'm pretty sure that they have a little bit of their back pocket that they can bring in, because this is some of the teams, aggressive teams coming from India, and it's tough to say if what they've shown already is what we're going to expect, because they have been preparing for this after a lot of rest out of esports scene from India. I'm really looking forward to what they're going to bring to the table. Yeah, and once again, it's the EWC. Of course, it's going to be different. The spirit is also very different. So yeah, looking forward to see how they are performing this year. Yeah, Southeast Asia is used to dominating EWC. I know a lot of the other regions, once again, Brazil wants to see if they can finally get that championship, Fluxo especially. And then we have other regions as well, right? We got Pakistan, we got some of the other ones. Yeah. And I'm looking at the teams from Group A, and I'm going to go with you, Neptune, on this one. Which team do you think can surprise us? We just heard Conchita talk about consistency, right? We want to look at consistency from some of these squads. Is there any squad that you're like, okay, hey, that one might end up surprising us with consistency? Well, there's a lot of things, teams really that hasn't shown that much from the previous competition. I think AJL is one of the teams that has that confidence right now, especially having that Clash Squad. So it's a different game mode overall. But the team, after getting that championship, they have been in good chemistry up to this point. Yeah, I have to agree with Neptune on this one, because AGAL, they have been showing amazing performance, and I think Dew is in the right place, right space, and yeah, it's always beautiful how he and Saifa would do a teamwork and play so well alongside each other. So I'm just really looking forward to see what AGAL will bring to the game this year. Oh man, all right, you agree with it too, okay. Yeah. Okay, now I'm gonna put you guys on the spot, because I just want to be able to say this word, and it's none other than Booyah! Who's gonna be taking the first Booyah of the day? Oh my God! You really have to ask. It's just one of those like close your eyes and start. We literally just started the show. Okay, I think I'm gonna go Buriram United Esports. Ooh, I like it. I like it. Neptune, come on. I don't know. I mean, some of the teams, best teams, I would say, doesn't show up that much. So I'm going for Aurora Gaming at this point from Group A.
Coming from Malaysia, also a first contender in here. I think they will be on fire right now. I thought you were gonna go with Evos. I'm not gonna lie. She's staying with Burim. I was like, for sure he's gonna go with Evos. But let us know in the comments below for everybody watching, who do you think is gonna be taking the first booyah? Because this is day one of Free Fire at Esports World Cup. You know what? Let's get started. The most dominant teams in the world will step onto the Gadir City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. 150 million players for this 2026. 33 million players play these games every day. But today we will have the 96 best players coming from all around the world. That's right, from all corners of the world, ready to go toe-to-toe until they are the last team standing. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the incredible Luti. And without any further delay, it's time to introduce your first 12 teams to the main stage. Yeah, there is a lot of pressure, of course. Like, there is so many young players and they are coming from all around the world. And you know what? Like, I think for a lot of them, it's the first time in Europe, the first time in Paris. So they are far away from home. Hopefully they're gonna make it right for this first day here at WDC Paris. However, it's time, ladies and gentlemen, to introduce our first 12 teams, starting with Demon's Pride! Titan Esports Club. Loud Sneakers. Buriram United Esports.
Gaming. Gun Dynasty. DS Gaming. Your reigning club champions, Team Falcons. Team Apex Gaming. Comme une fois qui va largement remporter ce texte face à Boone, mais il avait encore un flash de disponible, on lui autant. And now, your reigning esports World Cup champions, EVOS Esports. De la wave, la top lane. We've got $1 million on the line, a legacy to forge, and a champion to crown. So today is your only chance to make a first impression. Make it count. The first day of Free Fire in AWC Paris begin now! How hard is it to claim the throne? To rise above and be the best. Au niveau de la bonne taille. To end it, Russia with the final elimination. The Wonder Kid gets the job done. And how hard is it to stay at the top? Secret WAG rips away the Booyah and Bermuda. It requires strength, resilience, the ability to thrive under pressure. It requires consistency. 4 Booyahs in a row. And as the kingdom grows, so does the number of contenders. With familiar faces returning and entirely new forces knocking at the gates. But in the end, there can be only one king, one champion, and one booyah. And no king rules forever. Très très bonne stratégie. Ça neutralise un peu le premier passage que la map voulait avoir. गुड आफ्टरनून सर्वाइवर्स, स्वागत है आप सभी का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस में। सालों से हमने एक सपना देखा कि फाइनली इंडियन टीम्स ग्लोबल स्टेज पे पहुंचे, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप तक पहुंचे। फाइनली वो सपना पूरा हो रहा है। इस सपने को हम लोग साथ में विटनेस कर रहे हैं। कई सालों की मिन्नतें हैं और आखिर में जाके वो टीम्स हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी लोग मुझे हॉरर गेमिंग के नाम से जानते हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, आप सभी के चहीते कास्टर रॉकिन आरडीएक्स। भावुक आप भी हैं, मैं भी हैं, पर पहले आपसे पूछना चाहूंगा कितने ज्यादा खुश, बहुत खुश, क्योंकि ये चीज देखने के लिए आंखें तरस गई थी। फाइनली विटनेसिंग वो एपेक्स गेमिंग की जो एंट्री थी, आई थिंक दैट इज समथिंग जो यहाँ पे भारतवर्ष में मिलियंस को गैदर करेगी और ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट करेगी। बाकी सारी टीमों को भी शुभकामनाएं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 जीतेगा कोई एक अपने देश के लिए, लेकिन मुझे लगता है देखने वाले जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी के ई स्पोर्ट्स एथलीट को मोटिवेशन मिलेगी यहाँ पे। एंड फीलिंग वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस।
देखिए गौरवशाली हम भी फील कर रहे हैं और जितने दर्शक हमारे साथ घरों से जुड़े जो पेरिस नहीं जा पाए हैं, आज हमें साथ में मिलकर के इस मुहिम को शुरू करना, आने वाले 4 दिन तक हमें साथ जुड़े रहना है। इन 4 दिनों के लिए मैं कहूंगा छुट्टी ले लीजिए, वेकेशन ले लीजिए, अवकाश ले लीजिए, सिक लीव डाल लीजिए, पर हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के 12 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रुप ए अपने 6 मैचेस कंप्लीट करेगा, देन उसके ग्रुप बी अपने रिमेनिंग 6 मैचेस को कंप्लीट करेंगी। आज आंकड़ा बनाना है, आज एवरेज खींचनी है, आज उतने पॉइंट्स गैदर करने हैं जिससे आप कल के दिन खुद को टॉप 4 सिक्योर रख सकें, क्योंकि आपको पता है हर एक ग्रुप से केवल 4 टीम से आगे जा पाएंगी और बची हुई टीम्स सर्वाइवल स्टेज और जो बॉटम 2 टीम्स हैं वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी। सपना छन्न से टूट सकता है, तो हौसला बना के रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग अपनी टीम के लिए हैशटैग लगा रहे हैं? क्या इंडियन फ्लैग्स हमें नजर आ रहे हैं चैट में? नहीं आ रहे तो लगा दीजिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे बेहतर और कोई मौका मिलेगा नहीं। हिंदी डेस्क है आपके, तो प्राइमरी कास्टिंग फेसेस आपके साथ है सूत्रधार बन के आपका साथ निभाने के लिए। और पहला मौका आपको इतने वर्षों में मिला है जब भारतीय टीमों को देखने की जो आपकी मंशा थी इंटरनेशनल में, वो पूरी हो चुकी है। ये सपना नहीं है, सपना है तो अपने आप को एक बार फिर से चीमटी काट के देख लीजिए। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। इंडिया इज फाइनली हैज स्टेप्ड डाउन इनटू द वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप। अब यहाँ पे देखने की बारी ये आएगी और पहली बार भारतीय टीम वहां पे खेलने गई। डेफिनेटली एक्सपीरियंस में हमारे में कमी हो सकती है, लेकिन जोशो खरोश में और स्किल में कोई कमी है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। डेफिनेटली ग्रुप ए में चर्चा करनी पड़ेगी एपेक्स गेमिंग की, क्योंकि जिस तरीके से गए हैं उनका बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट देखा मुझे हो रहा है। क्योंकि जब से FFMIC का स्प्रिंग एडिशन उन्होंने जीता था, उसके बाद से लेके अब तक लगातार फॉर्म अच्छा ही गया है। रनर्स अप हुए थे फ्री फायर मैक्स एशिया